वीकेंड स्ट्रीम में स्वागत है। मेरा नाम है केरमस 90 और आज वापस स्टारफील्ड के पार्ट 20 में हैं हम। और पता नहीं और कितने पार्ट्स लगेंगे सही में ये पूरा ख़त्म करने में। और मेरे खांसी के जाने में भी पता नहीं कितना समय लगेगा। जो भी है देखा जाएगा। मुझे थोड़ा क्या बोलते एडिट करना है इसका गेम टाइटल स्टारफील्ड लिख दो और फिर सुनना है कि ये आवाज़ आ रही है कि नहीं जब भी मैं बात कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है कि नहीं जब भी मैं बात कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है नप नहीं आ रही है वो मेरी ये थी। तो फिर अब बचा सिर्फ स्टार्ट रिकॉर्डिंग लोड। और फिर ये इतना डिफरेंस क्यों है? और ये डेन अलग है ना। ठीक है ये ओके जाके बात करते हैं हम। बंदे का नाम क्या था? रॉन हो। I don't want to hear any complaints. कंप्लेंट्स तो तू सुनेगा ही क्योंकि मैं जाके रॉन होप को पहले अरेस्ट तो नहीं कर पाऊंगा मैं उससे। Keep an eye on your valuables. If you can't protect them. I have something for you. हाँ ठीक है। अरे हाँ इसका करना है ना ये ख़त्म करने के बाद। इसके बारे में भूल गया था मैं, भले ही ये बार बार बोलते गया। Dust except for the factory. I have something for you, I am something for you। ये बोल बोल के मुझे याद दिलाता क्या। ओह डैम थोड़ा ख़रीदना चाहिए था मुझे कुछ। यार अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी सीधे से जाके रॉन होप से बात करते हैं। यहाँ पे अगर इससे बात करूंगा तो लड़ाई शुरू होगी क्या रॉबर्ट्स इन सबके खिलाफ? होपफुली नहीं पर क्या पता। That's very generous, Mr. Hope. It's well earned, Birgit. We set some ambitious quotas. You met every one of them. Well, I won't pretend it was easy, but everyone pulled together and we got it done. I'll let you share the good news. Whenever, however you like. Thanks. I appreciate that. Off-worlders. Nothing ever good comes from them. अरे इस बार हाँ तू सही है, मैं बुरे न्यूज़ के साथ आया हूँ। Something more you need, Deputy? यस Good to see you again. Well, I've just received a report from the Marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here with good news. Oh, I learned something very interesting. Did you now? Well, don't keep me in suspense. Tell me about hiring the first. It's over. The disgraced war hero who went to prison, and you actually believed him? मुझे सेव कर देना चाहिए था। Don't presume to question me. You know who I am. That two-faced bastard kept the slate. Oh, I suppose this is his revenge against the Council of Governors for what happened during the war. I'm impressed, Deputy. It's clear you have a bright future ahead of you.
What's going on? What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. Tell me everything. ये बिल्कुल भी नहीं यूज करने वाला इसके खिलाफ. The cards are on the table. So why not? The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed an experimental fertilizer. And it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off when we made a discovery that changed everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. So use unwitting farmers to go on. ये ना उसके मुंह से ही सुनता हूँ सब कुछ. खुद कुछ नहीं बोलने वाला. We donated the fertilizer to select homesteads and let the farmers do the work. And when the time was right, we cleared the farm and brought in machinery to harvest the mineral-rich soil. The reduction in labor and materials costs sent my profits soaring. So, you decided to ruin the lives of some innocent farmers and steal their work? Oh, I hope you get a better slogan before you run for office again. Says the former criminal. I don't think you have the right to judge anyone, Barrett. Look around you. Everyone in this building, in this town, is depending on me. I provide the jobs that put food on their tables, clothes on their backs, and roofs over their heads. The fact is, the business hasn't been doing well lately. Without drastic action, cuts would become unavoidable. These people work hard for me, and they trust me to do the same in return. I cannot, I will not let them down. Look, I'll level with you. We're falling behind the competition. The hardworking people of this town depend on me for their livelihoods, and I won't let them down. Cutting my costs means saving their jobs. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so awful to innocent people, to families? Not another word out of you, Birgit. I can take your job and more. We'll discuss this later. In any case, I suppose the gig is up. I give you my word that I'll call off the operation and return the land to its rightful owners. And the people you hired muscle skills, what about them, huh? You're right, of course. Something must be done. I'll set up a fund to handle funeral expenses and take care of any surviving family members. We'll do this the right way. I give you my word. बंदा sweat कर रहा है. That's not enough, nah. You're right. Yeah. Those families deserve to be compensated for the inconvenience. Well, perhaps a discount on their next purchase from Hotech.
That's actually more insulting than helpful. With that resolved, let's talk about you. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. Nope. 20,000. Nope. Did I not make myself clear? I'm offering you a reward for a job well done. Nothing more. And with that job so capably done, we'll consider the matter closed. I'll be needing that slate from Major Hull, of course. You're going to turn yourself, and I'll be telling the Marshal everything. Definitely. I understand your position, पर I have a job to do नहीं बोलना चाहता. ये पूरा excuses थे इसके कि मुझे इन लोगों के लिए बोलना पड़ा. सीधे ये ब्रिजेट को बोल दिया मैं फायर कर दूंगा अगर ज़्यादा बकबक किया तो. वो बस अपने क्या बोलते बॉटम लाइन के बारे में सोच रहा है, ये लोगों के बारे में नहीं. Well, let's not be too hasty, Deputy. There's something else you need to consider. I'll do what's necessary to protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their livelihoods. Do you really want to put all these people out of work and make their families suffer? Like you made those farmers suffer? But on a much larger scale, yes. Don't try to put this on me, Hope. तेरे बिना होप टेक चलेगी. तू जरूरी नहीं है होप टेक के लिए. Well, I'm afraid there's no avoiding it. The past can't be changed, but the future is very much in your hands, Deputy. You put me away, and this company will fall apart. You have destroyed far more lives than I did. I'll make myself very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident at the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. You're not actually threatening to attack a Freestar Ranger, are you? Well, I can see where this is headed. वो है उसके actual thoughts. I'm important, you're nothing. साले के असली thoughts हैं वो. Bribe and threats are not going to work on me. Such a shame to see a promising career cut so tragically short. Oh shit. ये नहीं मुझे ये इस्तेमाल करना है. इतना सही है यार ये. कहाँ है ये? सही में? अबे यार उठ जा. Sure. I got some time to kill. Shit. ये मरा. अबे सही टाइम पे लेवल अप हुआ. मेरा ये काफी कम हो गया था हेल्थ. होप टाउन सिक्योरिटी. अबे कहाँ से मार रहा है मुझे? Didn't think this through, huh? और ये मार रहा है.
यार इसका सही और लगी किसी को अरे Wow. I was looking forward to more. मैंने उसको थिक उसकी तरफ एम कर रहा था कैसे नहीं हुआ Wanna go over rules first or what? रॉन का मुझे कोई भी एक्सपी नहीं मिला है रॉन को मारने का पता नहीं कैसे मिस हुआ यार उसके थिक उसकी तरफ मार रहा था मैं रिसर्च लैब ये पॉली में बाबा भूल जा रहा हूँ यार लेने का अगली बार लूंगा मैं चलो बात करते हैं पहले सेव कर दो क्योंकि मुझे लग रहा है ये कुछ कोई परसुएट करने का शायद हो सकता है He tried to have you killed. I don't understand. Mr. Hope always seemed like such a good person. But everything he said about the farmers and hiring those mercenaries, it was so awful. I'm just a little in shock. I'm still not sure I understand what happened. A conspiracy to steal farmland? It's just so hard to believe. That's not the Ron Hope I know. ये भी श्योर नहीं हो he cared about the people loyal to him वो श्योर नहीं हो No, you're wrong. That's not all he was. He always looked out for us, for his employees. No, of course not. But there was more to him than that. He had a genuinely good side, a caring side. And now he's... You killed him. Nobody should ever want that. Especially when it means killing someone who meant so much to so many people. What happens to us now? That would be Elana. Elana Nwankwo. She seems pretty capable. Maybe we'll be okay after all. I guess we'll have to figure things out. Find a path forward. Hey, you got this. Just need to be patient. ये इनके लिए अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा था पर वो बाकी सब के खिलाफ कुछ भी नहीं और एम्प्लॉय भी गारंटी नहीं है क्योंकि ये ब्रिजेट को फायर करने के लिए रेडी था अगर वो बग करना बंद नहीं करती तो उसके हिसाब से वो एग्जैक्टली एम्प्लॉय नहीं वो ज़्यादा क्या बोलते हैं ये कंपनी को लॉयल था सबसे ज़्यादा होप टेक कंपनी को You might want this. Not right now. Just keep it holstered. We'll get along fine. Oh, यार Workers like to play hard here. They deserve it. मुझे कितना और मारने वैसे लेवल अप के लिए 6 और शिप्स डिस्ट्रॉय करने हैं 5 स्किल पॉइंट्स है मेरे पास ओ बाप रे बाप कितने स्किल पॉइंट्स चाहिए इसके लिए ना 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 मैं इसके लिए बचा के रहूंगा पहले इसका करता हूँ फिर जाके मैं वो देखूंगा बाकी सबका पहले देखता हूँ कुछ सेल कर सकता हूँ कि नहीं हाँ ये बिल्कुल नहीं सेल करना है पैसा है नहीं इसके पास ज़्यादा कुछ वायबल नहीं है बहुत अच्छे है What if we leave a few things here and make a second trip? Oh well
मैं थोड़ी चीजें ये शिप में फेंक रहा हूँ। I have something for you. नहीं, गेट अप। कुछ भी करने से पहले मुझे अपना एनकम्बर्ड जो है वो निकालना है, तो उसके लिए ड्रॉप आना। ओके, माइक्रोगन, ये दो हैं जिनको मुझे शायद बेचना चाहिए कुछ। नो, रिसोर्सेज हैं इतने ज़्यादा, और मैं कुछ डाल भी नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। कंफर्म। 200 के नीचे चले जाए। ओके, 200 के नीचे चले गए ना। Glad to see you're back in one piece. ये क्या नई टेक्नोलॉजी है? वहां से वहां पे पूरा उड़ के चले गई। ओह, ये सब बाद में उठाऊंगा मैं। सेट। अभी के लिए मुझे वापस जाना है अकीला सिटी। अकीला कहाँ है? ये रहा। सीधे लैंड, क्योंकि मेरे पास कोई भी कॉन्ट्राबैंड आइटम नहीं है। Hey, you might want this. तुझसे तो बाद में ही बात करूंगा, अभी भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुझसे बात किया और पूरा का पूरा क्वेस्ट चेन तेरे का वो सुनना पड़ा मुझे। सही में यार, मैं वो तुझसे बात किया था क्योंकि तेरे पास कुछ था मेरे लिए अपेरेंटली। अब वो नहीं, बाबा बोलते नहीं जाता तो मैं तुझसे बात भी नहीं करता। Oh, यहाँ पे नीचे है मार्शल ब्लेक। Hey, deputy. We got a lot of bars in the city, all class joints. Well, except Aggie's. Good to see you back safe, Deputy. What's the word on the mech factory? Were the mercenaries hiding out there? Damn, you've got guts of steel. Did you find out why the first was taking over farms? Hired the first to grab farmer. What? Ron Hope? That's one hell of an accusation, Deputy. Are you really that surprised? Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. So he can make laws favorable to his business interests. Sure, he's known to look after his people, but do you really think he gives a damn about some farmers on Montara Luna? Did Hope explain his motives at all? Yes, he did. That has a familiar ring to it. I recall hearing about some Hope Tech initiative to help farmers. At the time, I just figured it was a PR stunt. Seems a little more sinister now. Please, tell me you've got some evidence to back up these extraordinary claims. All right, let's see what you've got. Interesting. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about destroying the slate. And you confronted Hope about this? Yep. Sounds like his pride got the best of him. Damn. This is going to send shockwaves throughout the Freestar Collective. If
If the people can't trust their leaders, anarchy could follow. Have a little faith, Daniel. We're not the United Colonies. One bad apple won't spoil the whole damn barrel. Easy for you to say. You ain't the marshal. Not yet, but you ain't gonna live forever, old man. While we've got you here, there's one last piece of business to take care of. Emma, would you please? With pleasure, Marshal. When you first joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. There's one thing left to do. A simple question. Do you feel ready to wear the badge of a full-fledged Freestar Ranger? Absolutely. I've been ready since the start. In that case, I won't hold you back any longer. Marshal, I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown exceptional courage, fearless tenacity, and a high regard for the safety of our citizens. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. Here's your badge. Wear it with pride. But don't forget the solemn responsibility it represents. Hey, all right. Damn proud of you. I know you will, Ranger. Let's hear it for our new Ranger. Woo! Way to go! ये क्यों नहीं clap कर रही? As a full-fledged, you have been granted your very own Star Eagle class starship with no registration fee required. Yes. Just और let me drink it. 15,600 क्रेडिट भी. वो सब छोड़ो, पहले तो अपना वो लो, नया स्टार क्लास शिप. इधर जाना, उधर ना, जल्दी चलो. Private sector. अब उससे याद है, यहाँ पे जाके इससे बेचने I'll say right up front that if you're short on credits, I can't help you. Any more charity cases, I'll go out of business. I want to do your business quick. Here, browse to your heart's content. मेरे पास कुछ बेचने के लिए है भी क्या अभी करंटली? यस है. अपैरल. दो हैं. ये ज़्यादा अच्छा है. क्या है? हाँ. Oh yeah. Persuasion chance. Actions, na. Chance to craft weapon mods without using resources. ये पहनना चाहिए जब मैं weapon mods craft कर रहा हूँ. Plus 5% chance of research surgeon developments. Throwables का कुछ नहीं. Miscellaneous में कुछ बेच सकता हूँ नहीं. पता नहीं क्यों उठाया मैंने ये, मुझे याद नहीं आ रहा किसके लिए था. और कुछ भी नहीं बेच सकता इससे मैं. उम्मीद कर रहा हूँ जो नया होगा मेरे पास, ये जो शिप मिलने वाला है वो. एक मिनट. ओह, यहाँ पे जाना है. यस, हमें एक स्ट्राउट एक्लैंड की शिप मिलने वाली है. सही है. Welcome to Stroud Eklund Star Yard. Permission to dock granted. अब मुझे अपना थोड़ा हील भी कर लेना चाहिए शायद. ना, अपने आप हील हो जा रहा है. बस सही में मुझे थोड़ा ये रिपेयर पार्ट्स खरीदने चाहिए मुझे. बोर्ड. Something for you. ओह शिट, फिर से गलत कर रहा हूँ. एक मिनट.
मुझे ऑलरेडी मिल गया है क्या? पैरेट ऑफ टू गैगरिन नहीं। ये कंप्लीटेड वाला, एक मिनट रुकना। ये वो वाले शिप का है यार, बी वाला, जिसके लिए मैं अपना लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बंदा कहाँ गया? I can't believe Strad pulled this off. Must have cost a fortune to build this place so fast. एक मिनट, ये वाला बंदा कहाँ है? मुझे बात करना है यार। मुझे अपना नया शिप देखना है। Let me know if you have any problems. Not much going on. There's computer. Dry dock blues. Proud Eckland is only able to craft these amazing ships with a dedicated support network of miners and traders. Although by law we cannot offer more than the standard trade authority compensation, why not work with a company that cares? Contact our award-winning salesman Havershaw for further details, profit and satisfaction results. Take care. Havershaw है कहाँ पर? You have a good day. ये customer है. If I were Tayo, I'd be very concerned about the new Strad Eklund models. हाल में क्या? छोड़ो. गैगरिन चलते हैं. इसके फॉर्मर पार्टनर को एक्सोनरेट करते हैं. Hey, you might want this. This is United Colonies Space. Maintain current course while we scan for contraband. And we're done. Enjoy Gagarin. एम दबाना चाहिए यार, टैब नहीं. पर टैब इतने पास है मेरे फिंगर के एम के तुलना में, तो हमेशा टैब ही दबाता हूँ मैं. Ellie is still taking names and holding people accountable around here. चलो बात करते हैं. सेव कर दो पहले. नहीं, लोड नहीं. तो यार सेव. I was just thinking that this is about what Irvin saw all those years ago when he arrived. He probably stood here thinking that he was going to make things better. He had a good heart. We need to reopen the case. See if there's anything that was overlooked the first time. We've done some legwork remotely, but we need to do some good old-fashioned investigating now. Hopefully it will be enough to clear Irvin's name. Maybe not in its current form, but I'm sure Irvin painted a much different picture in his mind. I'm thinking something impressionist. Softer edges, or plants. I wonder if Ellie has any pictures of old Gagarin in her office. Only one way to find out, right? Okay, let's... Yes, but listen. Nobody will stand up against the mining corporations around here. They're scared. She didn't want to lose the case, but she didn't have a lot to go on. Thanks to us, now she does. I sent that to our lawyer already. I asked her to confidentially review what we found. Ellie Yankton. She worked on Irvin's previous case. Ellie is one of the few lawyers on this planet who's willing to take on the mining corporations in court. Right. She said she would meet us at our office when we arrive. Hopefully she can tell us what we need to do in order to clear Irvin's name. Let's stick together, though.
Gagarin isn't a huge town, but it's not the kind of town that I want to get lost in. ये लॉस भी कर हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा. Welcome to Gagarin. Your ship need fuel? Repairs? Need some work done? Yes. Nothing for us to do. You're in good... Okay. Sure, have at it. कहाँ है मेरा पायरेट शिप? छोड़ो, ये अभी कर नहीं सकता मैं. ये रहा स्टार ईगल. रिएक्टर 29. क्लास क्या है इसका? इंजन ज़्यादा नहीं है पर चलता है. कार्गो कैपेसिटी 2280. इससे ज़्यादा है. सही है, इससे डेफिनेटली ज़्यादा है. ये सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स, पर ये बुरा नहीं है. 140 160 ठीक है, चलता है. फ्यूल 2800. बाप रे बाप, क्या शिप बनाई है यार ये स्ट्राउड एक्लन ने. थोड़े शील्डेड बस वाले डालने होंगे मुझे. कहाँ पे डालूंगा कोई आइडिया नहीं है. यहाँ पे डाल सकता हूँ. इस तरफ कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक शील्डेड वाला डाल दूंगा. देखो तो इसका जरा. नहीं, ज़्यादा तो कभी देखा नहीं है ये. 200 बिल्कुल नहीं. और ये बुरा नहीं है. 2300 पर रिएक्टर कम है इसका. 407. ये है अच्छा एक कार्गो कैपेसिटी. फिर से इसका थोड़े अच्छे कार्गो कैपेसिटी वाले हैं, पर कार्गो के अलावा उनमें कुछ नहीं है. खुद ही बनाऊं ज़्यादा अच्छा है. और दो जो बहुत ही अच्छे मिले मुझे. This is a dead industry, Chief Pretorius. Those jobs aren't coming back. But Reliant Medical, Archmite, and Satori Mills are dedicated to Gagarin. We were just hoping Gagarin could show the same dedication in return. I'm not closing up the city every time you want to run a tour group through here. Our investor visits are the key to making Gagarin a place that works again. A place where people want to live again. People are living here just fine. Now, if you'll excuse me, I have security work to get back to. What the fuck? Huh. I'm sorry, but if this isn't directly related to Reliant Medical business, you should really schedule an appointment. दीवार के थ्रू बात कर रहे थे. You're not on my account. Is this Archmite related? I'm on Gagarin to make money, not friends. ये चोरी करना चाहता हूँ. छोड़ दो, मेरे पास अच्छे शिप्स ऑलरेडी हैं. नहीं, it's alright. We'll get out of the damn city, remember what the horizon looks like. In the sun, with dust devils chasing us. You just want to go A to hazmat squad came through here the other day. Said they're cleaning out any heat leeches. Public safety concern. I think I missed something. Yes, you did. Terror Moths का लेटेस्ट न्यूज़ मिस कर दिया तूने. ये उधर पहुंचने का रास्ता You इधर से. ever read about the early history of space flight? So political. So familiar sometimes. हाँ, US versus Soviet Russia. Soviet Union. She said she would be expecting us. तो चलो उसके एक्सपेक्टेशंस को कायम करते हैं. वो नहीं बोलना चाहता था पर दिमाग में आ रहा नहीं था क्या है वो सेंटेंस तो मैं बोलना चाहता हूँ. सेफ. यहाँ पे परसुएट करना होगा शायद. Well, well, well. Barrett, you're actually here. Astounding. Ellie! Ellie, come on. I promised we'd stop by, didn't I?
People make promises all the time, Barrett. And most folks try to avoid Gagarin, not visit it. Anyway, I'm glad you made it out here. We have work to do, don't we? Not exactly, but similar cases. A corporation commits a crime and needs a scapegoat, so they select someone powerless to target. The quintessential Gagarin tale. Indeed. Yes. It was my first case as a bright-eyed, optimistic lawyer. Well, starting your career with a defeat is rough, Ellie. It was. But in a way, it made me more determined. It's not a resort. It's a working town run by mining corporations. You don't come here unless you need to, and you don't stay unless you have to. Or unless you're a bright-eyed, optimistic lawyer who genuinely wants to make things better for others. Right, Ellie? You're kind, Barrett. Yes, I suppose there's that type of person as well. Down to business. Perfect. What do you already know? So we already know that Irvin worked for Hephaestus Mining Company years ago, and they blamed him for catastrophic economic and ecological issues here on Gagarin. Yes. He lost his case because he didn't defend himself, and we had almost no evidence without him. He was publicly blamed for the economic woes, and his accounts were seized in compensation. His account on Gagarin specifically. It was just the amount he was paid years ago for the job. Right. They would have taken his assets and other settlements, but by law, his death prevented it. I recall receiving a message asking him to appear in court a day after his funeral. An unfortunate reality of interplanetary legal communiques, I'm afraid. Well, we can bring the case to a judge here if we have new evidence or a witness. What about the evidence we found so far? Yes, well, about that. It's just not enough. Best case scenario, we clear his name and his assets are returned, plus additional compensation. Not on its own, no. It's circumstantial. Helpful to support our claim, but not enough. In order for me to go before a judge, I'd like to have some solid evidence pertaining to motive. The courts won't entertain a challenge to its ruling unless we're sure that something major was missed in the original trial. What was the motive from the original trial? We had no solid motive after our witness withdrew his testimony. Yeah, we need something major. Documentation, recordings, a witness, something. It's been so long. How could we find anything like that? I've thought about this a lot since the original case. The mine that Irvin worked at was shuttered in 2309. They probably still have documents relating to whatever happened there with him. Not necessarily. To Hephaestus, it might be cheaper to run away and let the dust bury it all. Not really. All I know is that it's a Hephaestus mine from 20 years ago, somewhere on Gagarin. I don't have a couple decades to wait for you to search them all, so we'll need to narrow it down. That's where you come in. I don't know which mine he worked at when the incident took place. In theory, you could find that information on a Foundry terminal, if you can access it. You'll need a passcode. That's the hard part. Besides the Foundry records, there also might be something in Irvin's apartment. If he knew he was being framed, he might have held on to some documents there. Dear Diary, today we created an ecological disaster and then blamed it on an off-worlder. Love Hephaestus. Funny.
But you'd be surprised how often people write down things that get them into serious trouble. Oh, do tell. For comparison, I just finished a case against another company that was charged with illegally dumping waste near the town's water supply. Their permits specified a site that would have cost twice as much fuel, so they sent a memo to the driver to dump it at the first available location just outside of town. They actually wrote that down. Classic. Do you think your Argos extractor's credentials could work? That would be handy. Barrett, you brought someone with relevant work experience? I admire that. I'm nothing if not resourceful, Ellie. If that doesn't work, then maybe talk shop with another worker. See if they can help. We just need to find the mine where Irvin worked 20-some years ago. How hard could that be? Let me level with you both. It might not be possible to find enough evidence. But we may as well try, right? At least we'll know one way or another. If you'll excuse me, I have to get some court documents ready for this case. I should still have the key to Irvin's apartment. I hope it's worth our time, but I can't be sure. ठीक है तो पहले Foundry district isn't too far from here. पहले अर्विन के अपार्टमेंट में जाते हैं. गगारिन, यूरी गगारिन. मैं सोच रहा था तब काफी समय से गगारिन का पहला नाम क्या है. याद नहीं आ रहा था, फिर अभी सडनली याद आया. यूरी गगारिन. Yes. फर्स्ट मैन इन स्पेस. पहले वो अर्विन के अपार्टमेंट में. नाइस. भूत है क्या? Now I get why he wanted me to look after his plants. No windows, insufficient power for proper lamps. Oh, he must have been miserable. No wonder he wrote so much. Wait a second. What about this safe? I bet it's locked by a terminal. ये सब बाद में, पहले सब कुछ चोरी कर लो. क्रेडिट्स भी चोरी कर लो ये अर्विन के. ओह शिट, एक्सपर्ट अनलॉक है ये. ठीक है, करते हैं ये. ये एक हो गया, बाहर के हो गया. ठीक है, एक. ओके, ये भी हो गया. फर्स्ट और सेकंड हो गए हैं. अब बस आखिरी रिंग बचा है. एक. ओके ओके ओके, ये रहा ना. काफी आसानी से हो गया ये, सही बोलूं तो ये नहीं, कौन सा वाला किया था मैंने? ये और ये. अर्विन्स फाउंड्री पासकोड. ये अगर हम नहीं, पर हमारे पास आर्गोस का ऑलरेडी था ना, वो तो कांस्टेंट है, कुछ भी ले लो. तो फिर भी ये मेरे हिसाब से वो फाउंड्री में एंटर करने के लिए. और 3 पॉलीमर. यस, नॉविस का ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए. एक हो गया, ये अंदर का हो गया इसके साथ. ये और ये सिंपल एंटी माइक्रोबियल. ये कहाँ जाने के लिए? द फ्लोर इज इनएक्सेसिबल. मेरे हिसाब से ये जब क्वेस्ट
ख़त्म करेंगे और आगे तब हमें मिलेगा वो. Find anything helpful to the case, Captain? Well, Okay. I'll be. If you ever doubted Irvin's genius, look at all this. Still chugging along 20 years later. Okay. ये बाद में देखूंगा. ये बाथरूम है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा. पर यहाँ पे एक और लॉक है. रिक्वायर्स कंप्यूटर. ओके, तो वो यहाँ पे मेरे हिसाब से. सेव करो. सही में ये लेना जरूरी है. Finalize apartment purchase, send anniversary gift to Barrett, meet new co-workers at the bar. You'll receive a mine assignment and your Foundry passcode soon. The mine assignment is specified in the contract and the key allows you to access Foundry computers for additional information about your particular assignment. We look forward to working with you. Hephaestus HR. Natalena Hartono. Oh, application submitted to Town Hall. Application ID Irvin291, ERV291 at Town Hall. इससे hunting license क्यों चाहिए था? Arvin, we have to talk. It's about your job. If you can please reach out to me before you start the job. Assignment terminate Alpha Predator near the assigned mine for Hephaestus Mining Corp. This is a highly intelligent Alpha Predator that seems to have recently emerged near the newest Hephaestus mine. I've been assigned to work with Dr. Helgi Hoxson to uncover why the creature is so aggressive and whether it has anything to do with the mine's activity in the area. Oh, इसलिए hunting license ले रहा था Alpha Predator के लिए. Sweetheart, I know this is going to be a long job on Gagarin, so I thought I would send you some flowers to cheer you up. I know how much you like the ones that aren't cut, and I found someone there who had a life planned. Ta-da! Don't worry about me. Aja's got me on a new assignment already with Sarah. That will keep me busy until you return home. Missing you always, Barrett. Oh. Unlock save. Yes. Okay, शुरू करते हैं. Expert. हाँ, एक्सपर्ट लॉक पिक के साथ शुरू करते हैं. 1 9 थोड़ा और दूर चाहिए. ये ठीक है. ये और ये पहला ख़त्म हो गया. ओके, ये सबसे अंदर वाला भी हो गया इसके साथ. सबसे बाहर वाला बचा है. ये एक हुआ. ओके, 1 मिनट रुकना. 1 2 3 सिर्फ एक है. एक वाला है नहीं अनफॉर्चुनेटली. पर इसके साथ हो गया ये. वेल, सारे के सारे हो गए. आसानी से हो गया ये, सही बोलूँ तो. ये और ये नहीं. ये और ये. इसके लिए ये और ये. Unlocking safe done. Aha! Will you look at that? If we go to town hall, I bet we can get a copy of that hunting license. ठीक है, वो भी कर लेंगे. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ये पढ़ना है. क्रेडिट्स, रिएक्टिव गेज क्राफ्टिंग के लिए. ठीक है. 18,400 144. और वही है यार, ये कॉमन है. Is that Irvin's employment contract? Let me see. No idea where mine H363 is, but we could search for it at the Foundry database. मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ. Employee number 2837 Irvin Madani. Terms, contract, specific task, details to be confirmed upon arrival at the work site. Site mine H363. Payment deposited in account specified by employee. Okay. All right, we've got some solid leads, it looks like. The employment contract and the hunting license at Town Hall.
We need more. The more the merrier. Unless you're Hephaestus. It was a bit strange going through Irvin's old things, though. I was hoping for some old pictures, but nothing. What's that you have there? A plant? No, but I did find a few slates that might give us a clue. As well as a reminder to finish a physics paper that I never did. Yes, and it was always a remarkable species with an even more remarkable story. I wonder if the same is true for this guy. I'm not sure. It might not even be a plant. It might technically be a fungus. But there's probably a reason why Irvin tried his best to keep it alive. When we get back home, I'll go through some of his research notes. It might tell us something more about this plant. Hopefully it's not poisonous. Witchcraft, probably. But if you want a more scientific explanation, I have a couple of theories. It could go through states of hibernation, or draw moisture from the air the way epiphytic plants do. There's also that habitat dish Irvin set up for it, which gave it light and nutrients. Still, I'm not ruling out witchcraft. No, maybe not. But it helps me. Irvin was the last person to handle this plant. It mattered to him. No matter how the case goes, this warms my heart. I didn't expect to find it, but I love that I did. In any event, I'll go through Irvin's notes in more detail later. There's probably a flowchart somewhere with this little guy's name on it. Oh, on that note, we should give it a name. I'm thinking something simple yet refined. What do you think of Harvey? Harvey Dent. Harvey works for me. चलो ठीक है. Then it's unanimous. Okay. The three of us should get back to it. You, me, and Harvey have a case to solve. भैया पर कुछ भी करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन हो यार. मेरे पास फाइनली एक 3 पॉलीमर आए हैं. आप एक सोप डिस्पेंसर है वो. ये अभी भी यूज़ नहीं कर सकता मेरे हिसाब से. ये मैं बाद में इस्तेमाल कर पाऊंगा ये क्वेस्ट लाइन में आगे जब जाएंगे तो. ठीक है, अब बात करता हूँ. There's gotta be a way to look up applications. I do, actually. Here you go. एलियन स्टर फ्राई. एक मिनट रुकना, ये डेफिनेटली देखना चाहता हूँ. बग्स लग रहे हैं, बग्स की तरह. स्पेशली ये वाला भाग, ये बग का सिर है, ये उसका बॉडी थोरैक्स या जो भी बोलते हैं, थोरैक्स या एब्डोमेन. सेम ये सिर, ये उसका बॉडी. Sure the catwalk's all right. I don't want to have to fish anyone else out of the canyon. ठीक है, पहले टाउन हॉल चलते हैं, हंटिंग लाइसेंस का देखते हैं. और उसके बाद मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ फाउंड्री बचा होगा. Gagarin was a one industry city for a long time. Now, we've got a little bit of everything. पब्लिक एक्सेस कंप्यूटर ना, कोई कुछ और है नहीं यहाँ पे सिवाय ये पब्लिक एक्सेस कंप्यूटर के. is currently closed for renovation. Reopening date is scheduled for to be decided. बहुत अच्छे. Available application contract.
Error, your Argos extractor permit is still valid. You do not need to apply again until it expires. एक मिनट पहले ये देखो. Sorry, the complaint inbox is at capacity. Please try again later. Capacity में होगा क्योंकि ये गगारिन टाउन हॉल क्लोज कर दिया है और उन्होंने पता नहीं कितने महीनों या सालों से नहीं खोला होगा ये. Application type hunting license application Irvin Madavin location H363 sponsor if applicable FSS Mining Corporation date effective 6/1/23/909 status approved. Okay. Sponsored by Hephaestus after all. Ellie will be very interested to see this. वो बात मेरे पास मोस्ट प्रॉब्ली होगा पर मैं तुझे नहीं दूंगा क्योंकि वो मेल है. This Irvin's password. अब भाग रहा है यार. पहले क्यों नहीं भाग रहा था? Mandela Foundry and Mines. News now supporting all mining corporations currently operating on Gagarin accounts. Admin access granted? सही में? Hephaestus Mining Corporation, Six Sisters Mining Corporation, Mandala Mining Corporation. Mine listed by registration date. Acceptable filters, mine assignment number, company. Year active, returns a result if the mine was active in that year. Status, active or inactive. Enter query. Filter mines, Hephaestus. Foundry mines. H393 हमें चाहिए. Displaying all matches. 363 शायद, sorry. Company Hephaestus, year 2309, status inactive, displaying all matches. H363. नहीं. Download coordinates. Oh, nice. Shuttered. इसके coordinates मिल गए. Hephaestus. नहीं. This account has an outstanding balance of or fines owed to Hephaestus. It must be paid. Collect any paychecks. Please submit. So we error, contact an administrator. Employee null. Search database छोड़ो. Not enough credits. My paychecks decline to pay. Decline to pay. दोनों से कुछ नहीं होता, सेम चीज ही होता है. Get a passcode from an employee. Okay. Pending paychecks 1. 1000 का मिल गया. Nice. पहले इससे लेते हैं. Smells like the Centauri Mills plant is making a new test batch of something. Apparently, the corporate execs are talking about building their own priority catwalks above the city. You been up there? Good luck. The terrible kiosk still Pretty busted? busy trying to I relax. swear. Last time that thing worked, there were still humans on Earth. You get the lost her waiting for assessment back on your somebody? I did. Bank says it's worth double what it was when I moved in. So, you going to buy it? Only if I take up a life of piracy. I mean, इससे Didn't even have time to get my lunch. Ordinance look valid to me. Imagine Irvin thinking the same thing all those years ago. Just a job, right? Well, at least we know where to keep looking, right? Essentially any documentation that screams, Irvin isn't guilty, we made it up. I guess we'll see what state the mine is in. It's possible they collapsed it before they left. We just won't know until we get there. If that's the case, we'll just have to figure something out.
Okay, yeah. Are you? I knew I shouldn't have locked eyes with you. Dang it. What do you need? Not looking to chat, friend. Not now. Trying to hype myself to go back to work. तो यार ये बात ही नहीं कर रहा तो इससे कैसे मिलेगा मैं? You from off-world? Well, if you like your destinations hot and dusty, Garen's got you covered. Hephaestus mine कितना दूर है? पता नहीं कितना दूर है। ये तो आसानी से पहले ये चाहिए मुझे। You have my credits. Look, I know I said I'd have them today. You did. Multiple times. Oh. Next week, when my next check comes in, it's all yours. If I don't have those credits in hand next week, I'm throwing you off the catwalk. You've got my word. Supervisor is going to be mad that I'm late, but I just need a moment to myself before I go back. I'm on break. इस पे सोशल नहीं आ रहा है। बैरेट क्या कर रहा था इधर? इस पे सोशल आ रहा है? Look at you. So इस पे सोशल आ रहा है। Clint got a new delivery in. You want to go take a look? Depends. Is new shipment coming from Sidonia or New Atlantis? Sidonia. Pass. Stuff they ship in from Sidonia. Hey, more dust for you. If you thought it was hot out here, you should try working on the phone. अगर ये नहीं कर इसे नहीं कर सकता हूँ तो इसको देखता हूँ। Guess my usual lunch buddy isn't here today. Oh well. Rough day, right? Yeah. Can't believe my break is almost over already. Okay, welcome to mine worker. No open positions, mechanical engineers, no. किसी में भी कोई open positions नहीं है। यार। If there's harder work than Mandela Foundry and mines in Gagarin, I haven't found it. इसका क्यों नहीं हो रहा? Get a passcode from an employee. I haven't seen you in the mines before. You do? एक मिनट रुकना। Auto mode. Field of view. Toggle menu नहीं। नहीं। जा। A Tale of Two Cities. Oh, Chapter 3 ये चार्ल्स डिकेंस का कोई एक बुक पढ़ रहा है। रीसेट कैटेगरी और इसके साथ कुछ नहीं है। I don't have... Not looking to chat, friend. Deliver the evidence to the lawyer. Get a passcode from an employee. Go to Hephaestus mine. You still want to do that hike? Haven't seen you in the mines before. Bad idea. You know? It's a hike. We'll get out of the damn city. Remember what the horizon looks like. In the sun, with dust devils chasing us. You just want to go to Lizzie's. No one's going to meet us there. ऐसे भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है मुझे। Oh, crew and companions permanently do 5% more weapon damage on top of any other bonuses. सही किया यार ये उठा के। Get the assessment back on your apartment? I did. Bank says it's worth double what it was when I moved in.
So, did you buy it? Only if I take up a life of piracy. या पासपोर्ट कैसे मिलेगा Rough मुझे? day, right? Not now. Trying to hide myself to go back to work. ये कर नहीं सकते. 2 मिनट रखना यार. Get passcode from employee Starfield. फाउंड्री टर्मिनल. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ये जरूरत नहीं है क्या? Breach of contract. If you guys are talk to the law every time it pops up, I use the miner terminal and hacked it with the admin field to find the mining outpost. Okay, apparently एक बग है. अब देखे तो ये कितना पीछे है. ओह उतना भी पीछे नहीं है. Unfortunately काफी पीछे है. Are you selling some? Wait. Confirm. Hello, go to town hall. You have any problems? टाउन हॉल में जाते हैं पहले. You've been to Clint? Recently? You get crushed under all that crap yet? Hey, keep your eyes open. Sounds like one of Reliant Medical's regular couriers has gone missing. Okay. एक नया क्वेश्चन मिल गया मुझे. ठीक है. Hopefully that public access computer is still working. हाँ ये पूरा कर चुका हूँ मैं. फिर से करना पड़ रहा है मुझे बग की वजह से.
Application mining. You do not need to apply until it expires. ये सब भी नहीं कर सकता अभी मैं. Approved है और इन मदानी है सब ठीक है. चलो पूरा. The hunting license was sponsored by Hephaestus after all. Ellie will be very interested to see this. ठीक है. सीधे apparently ये लॉयर को दे देना है जैसे ही आए, वरना वो बग हो जाएगा फिर से, मैं वो एम्प्लॉय को बात नहीं कर पाऊंगा. तो पहले यहाँ पे जाते हैं. You're back. Well, what did you uncover? Barrett can explain. Thanks, Captain. We searched Irvin's apartment and found an application for a hunting license. Compelling, right? It's not much. Practically zero. Is that all you found? Well, we also have a copy of the actual license sponsored by Hephaestus, too. How about that? That's solid evidence, but likely not enough to bring it to a judge. Opening an old case is a higher burden of proof, I'm sure. I didn't mean to leave you with that impression, no. That is incorrect. It helps the case. It shows bad faith on the part of Hephaestus since they claimed he was not hired to hunt for them. But that's just circumstantial. It may help when we argue for a settlement value, though. If we win. Okay, now that is a solid lead. Well, don't let me stop you while you're on a roll, detectives. We can talk more later. You don't need to be a botanist to know Harvey's probably thirsty. 20 years is a long time to go without a drink. ठीक है, अब जाके वो करते हैं और कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. Want this? What's going on? Yes, right. Here, check this out. वो ये क्या? Alien pie इस बार. Alien stir fry नहीं. You get the assessment back on your apartment? Same dialogue जो यहाँ पे इतने बार सुना. The garden's not an easy place to live. Use Irvin's passport. View my assignment. ये पूरा already कर चुके हैं. ठीक है. Talk with Barrett. View my paychecks. ये ले लेते हैं. Get a passcode from an employee. ये आप जाके बात करेंगे, पर पहले बैरेट से बात कर लेते हैं. Actually नहीं मांगनी क्या? पहले सेव करो. Coordinates look valid to me. Imagine Irvin thinking the same thing all those years ago. Just a job, right? Well, at least we know where to keep looking, right? Essentially, ये already सुन चुका हूँ. I guess we'll see what state. If that's the case, we'll. Pretty busy trying to relax here. Look at you. So clean. First day? Didn't even have time to get my lunch. ओह इसकी यार मैंने ये सब कुछ All सही these किया. fancy new businesses going up, and we still can't get them to open up a chunks. I don't have any money to give you. I'm sorry. I knew I shouldn't have locked eyes with you. Dang it. What do you need? क्यों नहीं बात कर पा रहा हूँ इससे? You lost her waiting? यार एक मिनट, ये बग है यार.
for somebody? Are you selling something or what? I'm not buying those. एक मिनट रुकना. Rough day, but haven't seen you in the mines before, you know? Wait. ये लॉकर है, ठीक है. Coordinates look valid. Imagine Irvin. Well, at least we know. Look, I know I said. Essentially in a document. This is what we do. We're explorers, adventurers. But yeah, other than that, it's my fight. I don't want to get anyone else involved. You got my word. I guess we'll see what state. If that's the case. ओके, फिर से सेव कर दो यहाँ पे. और पता नहीं यार. वॉल्ट भाई माफ करना यार, ये एक बग आ गया यहाँ पे जिससे मैं अटक गया हूँ, जिसके वजह से मोस्ट प्रॉब्ली, इसलिए वो एक ऑनलाइन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ इसे, तब से कैसे ठीक कर सकता हूँ मैं इसे. बग है बेसिकली गेट अ पासवर्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय. तो इससे बात करने से एक डायलॉग ऑप्शन आना चाहिए. I don't कुछ have नहीं आ any रहा. money to give you. I'm sorry. Can't believe my break is almost over already. बात करने का होना चाहिए यहाँ पे. Clint got a new delivery in. तो अब कुछ नहीं कर सकता मैं, ये एक बग है. अभी के लिए मालूम है क्या, ये हेफेस्टस माइन में जाके देखता हूँ, होपफुली उससे हो जाएगा. एक्चुअली एक मिनट रुकना, एक और चीज़ करना है. फिल्टर माइनस ये पूरा कर चुका हूँ. Someone painted some choice. उम्मीद करता हूँ कि इससे बात नहीं करना पड़ेगा. इस पे बात करे बिना मैं ख़त्म कर लूँगा, उम्मीद कर रहा हूँ. अभी के लिए माइन को चलते हैं. वैसे माइन. वैसे वॉल्ट भाई कल वो बॉस फाइट कैसा गया? बॉस फाइट में ही छोड़ा था ना मैंने. नहीं, वो एरिया कैसे गया? वो पूरा लंबा सा एरिया. बाकी बॉस के पास पहुंच गए उस एरिया के, या पहली बार रास्ता मिला? This place was shuttered 20 years ago. चलता है, न्यू टेनेंट्स भी हो तो मारेंगे सब, और क्या. Oh! Juvenile pest. Mara? Shit. Oh! Long range इसके पास अटैक है. ना तू मुझे नहीं मारेगा. और ये मरा. ये एक और था, मैं 3 और है अभी. अडल्ट प्रेस कुछ स्कैन करने का नहीं है यहाँ पे. ओह
ना जुवेनाइल पे। ओह शिट, गलत टाइम पे रिलोड किया मैंने। यहाँ पे किसी मार, ओह डैम, गलत वाला कर दिया मैंने। ये ड्रॉप करता हूँ पहली बात तो, ये रख लेता हूँ। ये ड्रॉप करने के लिए कौन सा चाहिए, ना हाँ। ये मारा ना मैंने इधर। चलो अब जाके इसका करते हैं। Credits. All yours. Oh damn, काफी है यहाँ पे। इस तरफ अगर जाऊँ तो मुझे जाना है यहाँ पर है। Whoa, looks like they left a lot of stuff intact when they shuttered this place. Wonder if they were in a hurry or if it was just cheaper to replace it. Harisha या फिर cheaper to replace it. Take Bombs building key, definitely take. यार 4 एमो हमेशा जरूरत होती है एमो की। जितना ज्यादा एमो हो उतना अच्छा। ओह फक, डरा दिया ऐसे, मेरी तरफ कूदते हुए आया। Restores 3 health. Use as a component in crafting. ये इसलिए सारे उठाता हूँ, ये जब भी उठा सकता हूँ। और भी हैं यहाँ पे, आवाज आ रही है उनकी। Daisy pick, always needed. Fleshy, paraspooch, parspooch, pooch. नहीं, ये ऊपर उनके चलने की इतनी आवाज आ रही है यार सही में। ये एक ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे रिसर्च वाला हो सकता है, जो मुझे चाहिए। Looks like administration. Records. Bingo. Nope. Hephaestus 4-man computer. 4949. Ooh. Lockpick. सिंपल होगा ये। ये हो गया है, और ये अंदर, सबसे अंदर वाला हो गया इसके साथ। Done? Yes. Oh, suppress calibrated कोडामा। अच्छा है, पर क्योंकि ये कॉमन है मैं बेचने वाला हूँ, जिससे अच्छा पैसा मिलेगा। Impressive. We are still recovering from the collapse. The full death toll is unknown at the moment, but currently there are 13 confirmed dead. I will be consulting with the head geologist about how best to move forward from this unfortunate incident. While drilling, we seemed to have stumbled upon a nest of some sort. We aren't certain of the species of creature it belonged to, but it seems to be deserted now. We'll continue drilling once we know for certain the nest has been abandoned. Okay.
तो मेरे हिसाब से ये पेस्ट कंट्रोल के लिए ही अरविंद यहाँ पे आया था, एटलीस्ट उसके लिए बुलाया था इसे। भले ही उसे मालूम नहीं था कि वो इसके लिए आ रहा है यहाँ पे। क्लोरीन ना, यहाँ पे आवाज आई थी मुझे उनकी। यहाँ ऊपर आवाज आ रही थी मुझे उनकी, कहाँ पे है वो? इधर कहीं है लगता है, ये रहा ना। और है क्या? ओह डैम, इन्हें फोड़ दिया इन्होंने। इन्हें फोड़ दिया, इन्हें मार दिया इन लोगों ने, ये पेस्ट या जो भी हैं ये लोग। अगर जिन्हें मारना था मैंने मार दिया। इसके लिए आगे चलो। Decommissioned on 9/1/23. Contract long-term assignment conducting an environmental impact study which is incorporated in several upcoming land acquisition bids in 2310. Workstation Cavern Central Chamber. Terminate local predator assist Dr. Helgi with environmental impact study. Okay. Short term है, ये long term है, ये short term था इसे। Oh damn, काफी ज़्यादा है। Mine has been commissioned for the standard 2-year contract or until the extraction is complete. Irwin's contract is over and no more predators or any wildlife have been found at the mine. It's a miracle. Helgi unexpectedly quit today, citing ethics violation on a planetary scale. Oh shit, nahi yaar. Dr. Helgi Hodgson has been assigned to the current active Hephaestus mine to evaluate the situation with the subsurface bacteria. He has full authority to conduct any experiments needed. The crew found a flock of dead creatures around the entrance to the mine today. They seemed diseased or starved, but we don't know why they came to the mine. Exactly on time, 6 months to phase 2. We have penetrated the subsurface layers of the slime and biomass below the top layers of materials and have full local access. Gases are escaping through the bacterial layers at a higher rate than previous mines in this biome, but that has assisted in reducing the amount of biomass. Dr. Hodgson is investigating. Red Life, volatile gases update. The volatile gases that were previously requiring special protective gear have plummeted below critical levels for the 4th straight week, as is the trend with mines after the first year of completion. ये यार स्क्रॉल के साथ सारे चीज़ों के साथ प्रॉब्लम है यार। मेरे माउस के राइट क्लिक के साथ प्रॉब्लम है, स्क्रॉल व्हील के साथ प्रॉब्लम है, मेरे कंट्रोलर के साथ प्रॉब्लम है, फ्यूचर में मेरे कीबोर्ड के साथ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। Sent for security today when one of those local predators arrived to feast on the collection of dead carcasses nearby. We have started to burn their corpses in hopes that it will go away. Large predators have been circling the mine and attacking each other. Purpose is unclear. They are very violent and security from Gagarin settlement is unprepared for this, so they left. We sent for further assistance. This could disrupt extraction. ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं इस माइन की। Hephaestus has hired Erwin Madani to kill one of the main predators that hasn't left the area for weeks. He will assist Dr. Helgi Hodgson, who is studying the strange predator behavior. Predators are dead. Erwin Madani was able to kill the largest of the predators. Currently, no wildlife is at the mine anymore. Unrelatedly, the volatile gases from the extraction point are now fully depleted. This did not happen at the previous mine. Year 1 is complete. We are now at full production. Site is expected to be fully depleted far ahead of schedule due to the removed complication of volatile gases. New estimated depletion rate 125.23.9. Okay, और ये quit ये पढ़ लिया था. Hephaestus ordered the immediate closure of this mine and all others in the area, even though we are at peak extraction and efficiency. Mine will be sealed in the standard fashion.
All equipment unrelated to extraction is to be left behind. Decommission कर दिया. अरे अब अनलॉक करना है. यस. तो फिर चलो करते हैं इस एक्सपर्ट लॉक को हैक. ये किसी में भी नहीं है, ये नहीं है. ओके, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें है ना. ये है और 2 वाला ये है. ठीक है, इससे सेकंड लेयर हो गया इन 2 से. ये ओके, अब सिर्फ और सिर्फ बाहर का लेयर बचा है. सिंपल. इतना सिंपल था यार, ये सही में बहुत ही सिंपल था ये वाला लॉक. तो शुरू करते हैं. Unlock research terminal H363A has been unlocked. 363B. Okay. All right. Now let's go find Irvin and Helgi's lab stations. नीचे जाना होगा. हाँ. यहाँ पे कोई है क्या? रिस्टोर हेल्थ. ठीक है. I mean, ये रिसर्च स्टेशन है तो यहाँ पे रिसर्च मॉड्यूल वो होना चाहिए. एटलीस्ट उम्मीद कर रहा हूँ होगा. कंप्यूटर. I've spoken with foreman Shulman regarding the unfortunate collapse that occurred. He was recommending that we evacuate the rest of the mine in case of a total cave-in. To assuage his fears, I scanned the surrounding areas of the mine in an effort to prove its stability. What I found was quite encouraging. Continued drilling should pose no danger of a collapse. Although the veins we have been mining for some time are currently trapped beyond the collapsed area, I believe there is a solution. We can dig around the collapse and circle our way back to those veins. I'm confident this course of action will be satisfactory for Mr. Shulman. ठीक है. निकल. ये है अरविंद मदानी का कंप्यूटर ना. They are not going to like what I have to say. Dr. Helgi Hodgson, Irvin. Irvin, I've included your analysis in my papers which I've sent to the main office. Thank you for helping me collect and analyze the data. I sincerely hope this makes a difference. The data tells a troubling story. Could the microbial colony network be poisoned by the chemicals from these mines? Could this cause a global collapse? Oh, इसलिए हेफेस्टस करने की बंद करने की कोशिश कर रहे थे. अगर ये सही है तो, क्योंकि ये केमिकल्स जो इस्तेमाल किया उससे क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल कॉलोनी नेटवर्क जो बेसिकली यहाँ पे लिखा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल कोलैप्स हो गया. उसे रोकने के चक्कर में ये अरविंद को मार दिया मेरे हिसाब से. So, they ruined the ecosystem here, and it had nothing to do with Irvin. This is it. This is what Ellie needs to see. Okay. Search for evidence उतना दूर है. उसकी जरूरत नहीं है मुझे पासकोड की. डिजिपिक ये डेफिनेटली चाहिए, पर आवाज आ रही है अभी भी उनकी. कहाँ पे ये इनकी इतनी आवाज आ रही है सही में. अब मारना चाहता हूँ इन्हें. Oh shit!
शिट। ओह अचानक से हमला कर दिया इन दोनों ने। देख के चेहरे को क्या हुआ? Old-fashioned, huh? Love it. सबको क्या हुआ है सही में? खोल सकता हूँ क्या? हाँ। वो लेटा मेड पैक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो गए थे ये जब फर्स्ट टीम या जो भी है वो फर्स्ट जो भी है उनके खिलाफ लड़ा था मैं। 6000 इसको रखूंगा मैं। और क्या क्या है यहाँ पे? सब कुछ मिल रहा है सिवाय रिसर्च स्टेशन के। यार रिसर्च स्टेशन चाहिए मेरे पास। 3 पॉलीमर है फाइनली। सेव करो। ओके शुरू करते हैं इसके साथ। नो यस। ओके सिर्फ एक वाला कहीं नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता मतलब। और नहीं 2 वाला चाहिए। 2 वाला है क्या कहीं पे? ये नहीं होगा ना उधर, प्रॉब्लम वो है। ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इन 2 के लिए जो लंबा सा चाहिए उतना लंबा कोई है नहीं। इसके साथ ट्राई करता हूँ। चलो हाँ चलो बाहर वाला हो गया। अब नेक्स्ट वाले का ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है। ओके ये 3 हो गए। अब 1 2 3 4 ये शायद नहीं है। इसको इस्तेमाल करने 1 मिनट। ओके ये यहाँ पे ऐसे है ना। 1 2 3 ओ ये रहा। नो गलत सोच रहा था मैं। नहीं यार 3 वाला कोई चाहिए मुझे जिसके 2 पास में हो। अनफॉर्चुनेटली नहीं है वैसा कोई। के साथ जाओ 1 2 3 4 पास में 4 वाले भी ऐसा कोई नहीं है। डाल सकता हूँ क्या इससे? यहाँ पे डाल सकता हूँ और फिर उसके बाद नहीं ये और ये 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 हो गया क्या? 1 2 3 हाँ हो गया। सेकंड वाला भी हो गया। इन 2 के साथ सेकंड वाला भी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला करना है। ये 1 है इसके साथ शायद हो जाए।
क्या था इसके साथ? ये ना, हाँ ये और ये वाला नहीं है। ये हो गया, ये नहीं, ये नहीं, फॉर्चुनेटली नहीं। नॉप 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 नॉप। ये एक हुआ, ओ यस हो गया। नहीं ये नहीं, कौन सा किया था मैंने? ना मुझे लगा हो गया था पर नहीं हुआ। ये आखिरी वाला जो है वो सिद्दत करेगा लगता है। फिर नहीं, शायद हो गए, सारे हो गए। तो फिर ठीक है, सारे हो गए। अब करते हैं शुरू। ये और ये और ये। बैकनेस ये डेफिनेटली चाहिए। क्लोरीन, बेंजीन, यूरेनियम, सीलेंट। अभी भी एनकम्बर्ड नहीं हूँ मैं, वो सुन के सबसे हैरान हूँ मैं। इतने सारे चीज़ें उठाया हूँ पर अभी भी एनकम्बर्ड नहीं हूँ। चलो आगे बढ़ते रहो। वेल एनकम्बर्ड हूँ मैं अब। The evidence we found so far is compelling, but let's cross-reference it with the other terminals just to be sure. Can I carry that for you? कितना रख सकता? ज़्यादा कुछ रख भी नहीं सकता ये। Okay. Let's keep looking around. आवाज आ रही है यहाँ से? क्या है ये? Spooky, spooky, spooky. I know it's not uncommon. Shit. आजा तेरे खिलाफ कहाँ चले गया वो पता नहीं। एक 108 इसे क्यों रखा हुआ है मैंने? बेसिकली वही सेम है, कम डैमेज के साथ और बस फायर डैमेज है इसमें एक्स्ट्रा।
ये और ये सेम ही है, इसे पर इसका नाम रेज़रबैक है, इसका नाम डेड आई है। 53 ना, हाँ दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका इस्तेमाल करना होगा अभी के लिए, उसका एमो कम हो गया काफ़ी। और भी आ रहे हैं क्या? लगता तो नहीं है। Smells weird in here. Like seaweed and salt. नो मैं मैंने अपना वो गिरा दिया कटर। शिट, पता नहीं कहाँ पे गिरा दिया मैंने उस कटर को। या कोई कटा मिला तो उठाना पड़ेगा अब मुझे। कोई मरे हुए इंसान दिख जा। और इसे मार दो। नहीं, क्वीन पेस्ट, ओह वाओ। मारते जाओ। रिलोड। मारते जाओ, ये लगभग मर गया। Oh shit! नहीं, तू कहाँ भाग रहा है? ओह, ओके। अच्छा हुआ यार, मेरे लाइफ इतने बार बच गए हैं वो एग्जॉटिक उसकी वजह से। एग्जॉटिक वाला जो आर्मर पहना हूँ, जो कम लाइफ पे अपने आप यूज़ कर लेता है। ओह, मैं गलत चीज को मार रहा था। Fine, let's go. Ah, this never gets old. अलविदा। Oh. Wonder if those things moved in after Hephaestus left. These things chased them out. Okay. क्वीन को मार दिया, मतलब और नहीं होने चाहिए अब यहाँ पे नए एटलीस्ट, पर मोस्ट प्रॉब्ली होंगे, फिर से ये स्पॉन हो जाएगी। गेम है, असलियत में तो क्वीन को मारने के बाद नहीं होते हैं, क्योंकि क्वीन ही ज़्यादातर ये जो इंसेक्ट्स वो सब एग ले करती है सोसाइटी में। ये रहा
Extracting decent specimens is delicate work. Okay. मेरे हिसाब से सबको मार दिया मैंने. अब जाके वो पढ़ता हूँ. Studies. Bring evidence. Ecosystem collapse. Summary: if a local queen in the regional hive of apex predator dies, one of the drones is promoted to queen by consuming the remains of the previous queen. The process of promotion takes several months. Full report sent to main office. Below the surface of Gagarin exists a vast microbial colony network that spans much of the planet. These colonies contain many species of microbes working together to convert dust and organic material into soil. Without these colonies, Gagarin's entire ecosystem would be devastated. The apex predator species is an important component of the Gagarin ecosystem. The species is eusocial and has a strict caste structure with drones, defenders, and a primary reproductive gyne or queen. The gyne of each region reproduces irregularly, and waste produced by the nesting process is used exclusively by the soil microbes to form massive colonies before the surface. Conclusion: biochemical analysis of subsurface bacterial colonies reveals near total collapse caused by the gases released by the mining processes. Killing apex predators devastates a local colony temporarily, but they can rebound. The chemical released from the mines, however, are 95% responsible for the collapse of the ecosystem. My full report, including data, methodology, and analysis, will be sent directly to the main office. वो ये माइनिंग के वजह से पूरा इकोलॉजिक कोलैप्स हो जा रहा है इस गगारिन का. Due to witnessing numerous ethic violations at Hephaestus, I quit. This is my 180th report about the severity of the situation. What Hephaestus is doing in these mines will cause the biome to become unstable in the short term, and it will ruin our environment permanently in the long term run. Read my studies if this is unclear. If anyone reads this at all, what a waste. Seems like Helgi tried to do the right thing. Take all. ना डैमेज भी ज़्यादा नहीं है. 2300. हाँ. एक मिनट, कहाँ है ये हमारे बगल में ही तो था. कहाँ गायब हो गया बंदा अचानक से. सबको मार दो. एक और है. Shit. Oh. Shit. मुझे लगा था मैंने सबको मार दिया, पर नहीं, अभी भी बंदे बच्चे हैं. तो सबको मार के निकलते हैं यहाँ से. पूरा क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सोसाइटी बर्बाद कर रहा हूँ, पर क्या कर सकते हैं. बंदों ने मुझ पर हमला किया तो उसका रेट्रीब्यूशन होना चाहिए. एक मिनट रुकना, थोड़ा लंच का डिस्कशन हो रहा है.
2 मिनट देना। चलो, ये वही है ना जहाँ पे क्वीन थी? हाँ, वो ही है एरिया। यप, डेफिनेटली वही थी, वही एरिया। वो स्टेशन जहाँ पे बात किया था। चलो, यहाँ पे सबको मार दिया। अब ऊपर चलते हैं वापस और एली को सब कुछ एंग्री अडल्ट फ्रेंड। सब के सब एंग्री हैं और सब के सब मरेंगे। शिट। गुस्सा है क्योंकि हमने क्वीन को मार दिया। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर सकते, हम ज़्यादा ताकतवर हैं उनसे। अगर मरना नहीं चाहते थे तो ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए था तुम्हें। एंग्री। जा। Oh shit. Of course, something doesn't seem right. ये सब हम पे हमला कर रहे हैं लगातार क्योंकि हमने उस इनके क्वीन को मार दिया। मैंने 4 को मारा था, यहाँ पे सिर्फ 3 क्यों दिखा रहा है? तो 3 को ही मारा क्या मैंने? 148। ये कभी इस्तेमाल किया नहीं है। ये अलग है। और कोई आ रहा है? कोई और एंग्री पेस्ट है? हाँ मैं क्या? हाँ इधर चलो अब यहाँ से। अब मुझे कुछ बेचने वाला चाहिए, कोई बंदा। क्योंकि सही में मेरे पास कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रहे हैं अभी। May as well, right? एक कट्टा चाहिए मुझे।
मैंने अपना एक जो कटा था वो अंकित भाई काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। मेरा सब सही चल रहा है। ओ फक, कहाँ पे? आप बताओ आपका कैसा चल रहा है? ओ पैक ट्रॉन्ग विंग सीट बैट, पैक ट्रॉन्ग विंग सी बैट, वो है जो आ रहा है। ना ये ओपन वर्ल्ड बेथेस्डा गेम है, इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? ये गेम पसंद नहीं आया क्या आपको? आपने खेला ये गेम वैसे, स्टारफील्ड? हाँ वो है, 2 वीक से ज्यादा हो गया, पर ये इतना बड़ा है। Trade authorities always buy. Kiosk right here for you. अब वैसे भी वो भी है ना, मैं हफ्ते में यूजुअली सिर्फ 2 बार ही खेलता हूँ, तो मेरा वैसे टाइप की गेम्स नहीं है जो 1-2 हफ्तों में खत्म हो जाते हैं। बेचो नहीं, फिर से गलत कर दिया मैंने। इसको रख, नहीं बेच दो इसे। तो अभी कौन सा गेम खेल रहा हो आजकल? रेमिनेंट खत्म हो गया? हाँ फर्स्ट वीक वो ऑफ लिया था मैंने, पर वो ये उसमें भी एक दिन मुझे ऑफ लेना पड़ा, पर थोड़ा काफ़ी बचा अभी भी ये इसका। उसके बाद नहीं लिया ना मैंने, फर्स्ट वीक ऑफिस से ऑफ लिया था इस गेम के लिए बेसिकली। वो भी था गेम के लिए भी लिया था, और प्लस ये भी इसलिए भी लिया था क्योंकि मेरे बहुत छुट्टियां बचे हुए थे और मुझे वो खर्च करने थे, तो इसलिए मैंने वो स्टारफील्ड के लिए 1 वीक ऑफ ले लिया, वो पूरा खेला। पर उसके बाद मैंने फिर वही है, वीकेंड ही चला है मेरा। Ellie! Hello? Welcome back, detectives. Ellie, I sent you all the data from the mine already. As I'm sure you know. Yes, I've been reviewing it. Sit down. Let's have a chat about it. हमने भी क्या बोलते, मेरे वॉल्ट हंटर भाई ने भी ख़त्म नहीं किया। हम कौन से बॉस पे अटके हैं याद नहीं आ रहा, वो वाले बॉस पे अटके हैं। पता नहीं आप वहाँ पे पहुँचे हो कि नहीं, जिसका हाथ के बीच में कोई गोल सा रहता है। उस बंदे का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस बॉस का। वो हवा में उड़ते रहता है, कोई साइबर पंक टाइप के एरिया में रहते हैं। पता नहीं आप वहाँ पे पहुँचे हो कि नहीं। वेनम बॉस मुझे याद नहीं आ रहा कौन है वेनम बॉस, सही बोलूं तो। Welcome back, you two. How was the trip to the mine? You're gonna love this, Ellie. Okay, someone better tell me. Come on. We found the coordinates to Irvin's old work site and went there. Huge battle. Fire, explosions. Pew, 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 pew. Barrett, please. You should have seen the plants in there, too. Weird stuff. Anyway, you read over the documents we found there, right? What do you think? What you both found in that mine is remarkable. These documents show that the chemicals released by the mining process contaminated the ecology even before Irvin was tasked with removing the predators. And they also show that Helgi informed Hephaestus of the issue, and it was repeatedly ignored. आप शायद हमसे आगे हो अंकित भाई। I think we've got ourselves a case, my friends. क्योंकि मुझे रैवेज अभी याद नहीं, ना वेनम याद है कोई। That's what I wanted to hear, Ellie. Woo! Yes, but it's still likely to lose. Because what we really need now is Helgi as our witness, and that is a problem.
Helgi isn't an ideal witness at all. He was our star witness the first time, and he never showed up. Plus, he's got a reputation around town. After he quit, he went a एक मिनट bit. ये डायलॉग हो जाए उसके बाद एक बार चेक करता हूँ वो बॉस का नाम. I can handle a bit weird. आपने मोस्ट प्रॉब्ली उसे मार दिया I know the जहाँ captain पे हम can अटके हैं. Clearly. But the judge might feel differently. It might be worth finding some character witnesses too while you're looking for him. I'm glad you're taking it in stride. It's just, for a case with this much science, we need the man who wrote the claims to back them up. Maybe even explain it in layman's terms. We could, but I think we'd lose the case, bluntly. We can verify these documents are real, but Hephaestus can counter by attacking Helgi's character. They'll label him a disgruntled employee and then find a dozen independent scientists to confirm Irvin was at fault. But with Helgi in court, he can explain the science and help me challenge any countering theories during cross-examination. That's also a bit tricky. He's hard to find. Doesn't really stay in one place for long. You might ask Dr. Kayala. She checks up on folks who fall through the cracks sometimes. You'd have to convince her to tell you where he is. That might be hard. Sounds like we're making a stop at the med clinic. We'll be back when we convince Helgi to be a witness. Listen, if he refuses, then he refuses. Can't force him. Yeah, we don't want to press him too hard. The last thing we need is him refuting what he wrote. This is going to take a light touch, but I think we can handle it. ओके एक मिनट दो अंकित भाई, मैं चेक करता हूँ वो बॉस का नाम. आप रैवेजर बोल रहे हो ना? देखता हूँ. पहली बात, मैंने उससे देखा भी है क्या? रेमनेंट 2 रैवेजर. नोप, आप डेफिनेटली हमसे आगे हो. रैवेजर के पास भी नहीं पहुंचे हम. बॉस में जाता हूँ मैं. हम अटके हुए हैं. यहाँ पे दिख रहा भी नहीं है बॉस जहाँ पे हम अटके हुए हैं. एबरेशंस नहीं, फिर बॉसेस. और ये रहा ना. हाँ, ये वाला ही है जहाँ पे हम अटके हैं. इसका नाम है शाहला स्पेक्ट्रल गार्डियन ऑफ नेरूड. तानी आप वहां पे उससे लड़े भी हो कि नहीं? याद आ रहा है कोई नाम ऐसा? एक मिनट रुकना, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ इस बॉस को. वाह, ये यहाँ पर इतना छोटा अटक गया बस. वेल मैं उधर ला नहीं पा रहा हूँ. वो रैवेजर तो हम डेफिनेटली नहीं पहुंचे हैं. रैवेजर तक हमने नहीं किया है उसे. रैवेजर पे पहुंचे हैं. और दूसरा क्या बोला था? वेनम ना. वेनम को देखता हूँ एक बार. वेनम रेमनेंट 2. हाँ, वेनम पे भी नहीं पहुंचे. आप हमसे काफ़ी आगे पहुंच गए हो. रेमनेंट 2 के अलावा कोई और गेम खेल रहे हो आजकल अंकित भाई? जैसे लाइज ऑफ पी. लाइज ऑफ पी काफी अच्छा गेम है जो मैंने सुना है और देखा भी है. जो ओह, ये आया नहीं आपके लिए? मेरे हिसाब से ये रेमनेंट 2 में क्या है ना, ये आरएनजी होगा. कौन सा वर्ल्ड नेक्स्ट मिलेगा तुम्हें? आपको शायद दूसरा वर्ल्ड मिल गया, हमें कोई और वर्ल्ड मिला.
क्योंकि वो भी सही है कि जब मैंने अपना खुद का शुरू किया था, मेरा पहला वर्ल्ड जो था वो वॉल्ट अंडर बाई के पहले वर्ल्ड से अलग है, और जो मेरा पहला वर्ल्ड था बेसिकली, उस वर्ल्ड में हम अब तक वॉल्ट अंडर बाई के रन में पहुंचे ही नहीं। ऑप्शनल वाला का है, इसकी जरूरत नहीं है। पोटेंशियल कैरेक्टर विटनेस। आप एंड के पास हो। ये एक सेपरेट वर्ल्ड में एक साइबर पंक, एग्जैक्टली नॉट साइबर पंक, कैसे बोलूं यार इसे। एक और गेम था इसके एस्थेटिक के साथ जिसमें हम अभी करंट वर्ल्ड में हैं। सीधे बोल देता हूं, देख लेता हूं ना यहाँ पे। बॉस नेरूड, बेसिकली नेरूड में है ये, नेरूड वर्ल्ड। दिस बॉस इज नॉट ऑप्शनल अपैरेंटली। आप इससे फिर डेफिनेटली लड़ोगे, ये ऑप्शनल बॉस नहीं है, आप इससे लड़ोगे, टेंशन मत लो। चलो अभी पहले मैंने ऑलरेडी सेव किया, पर एक और बार सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। Are you injured? Is there something I can help you two with? Do you happen to know Dr. Helgi Hodgson? We're trying to get his help with something. Sorry, who are you exactly? We're detectives. Self-taught and unaffiliated. Freelance detectives. With the emphasis on the free part. Wait, what? Detectives? Sorry, I don't think I know what you're talking about. I treat anyone who walks in my आप ऑलरेडी doors खत्म कर if दिया? I'm able to. उससे लड़े बिना कैसे किया फिर? No, not really. I mean, there's Irvin the Slaughterer and Irvin the Scourge of Gagarin, but I doubt that's the same person, right? I'm sorry, I'm not a tour guide. You'll have to ask somebody else. We're trying to help him. And Gagarin, actually. Ellie's a good person. That bodes well, but I can't violate my oaths. I'm sorry. Listen, I can say that Helgi took up a job working at Clint's store just down the way. I saw him there stacking boxes the last time I picked up an order. I've got to get back to my work here, so if there's nothing else... Medical supplies. I'm sure I have something I can spare. एड, हाँ मुझे जो चाहिए वो क्या है? ट्रॉमा पैक नहीं, मेड पैक। यस, बाय ऑल। ये बहुत ज़्यादा चाहिए मेड पैक, सही में। All right, let's examine you. Honestly, I'm surprised you're walking around like this. Nothing a little needle and thread can't fix. Ship shape and ready for action. नेरूड हमारे लिए तीसरा एरिया था। If it's patient medical records you're after, I'll remind you, I'm not at liberty to discuss that. We're thinking of taking Hephaestus to court with Dr. Hodgson as a वैसे witness. Remnant 2 के अलावा कोई और खेल रहा हूँ क्या Given भाई? the situation, we're worried the defense might या अभी के लिए cast वो ही aspersions कर on रहा his हूँ। character, even question his mental health. That's unfortunate, but not surprising. Highest difficulty में खेल रहा हूँ। If he agrees to testify and grants me permission, I could vouch for his well-being. Thanks, Doc. If he does end up testifying, we'll definitely need you for the trial. Ellie Yankton will be in touch. No promises, given patient confidentiality, but I'll do my best.
ओके मेडिकल सप्लाईज भी खरीद चुका हूँ चलो I need to get back to my work now, if you don't mind. ओह फाइनली रिसर्च लैब यस कंफर्म हेलमेट मॉड्स 2 मिल गया मेरा फेस सूट डिज़ाइन चाहिए इन सब के लिए और वेपनरी के लिए क्या चाहिए वेपन इंजीनियरिंग पेडे 3 इंटरेस्टिंग लग रहा है पर उसके अपेरेंटली काफी इश्यूज आ रहे हैं अभी लोगों को खेलने में ही Who here the other day said they're cleaning out any heat leeches. Public safety concern. I think I missed something. ये सर्वर उनके बार-बार क्या बोलते हैं बंद होते जा रहे हैं सर्वर साइड इश्यूज आते जा रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्या करना चाहता था हाँ ये है ना ये वेपन वाला थोड़ा मुझे करना होगा यार नहीं सोशल भी नहीं ओके एक ही है सही है ये नहीं चाहिए यार मुझे साइंस जियोलॉजी एस्ट्रो मेडिसिन सर्वेइंग वेपन इंजीनियरिंग ये राना बहुत अच्छे इसके लिए बहुत चीज करना होगा अगर वो करना चाहता हूँ तो लिंक दी हेवन सेव कर दो वैसे शुरू किया है आपने ये कल ही रिलीज हुआ था ना ये क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है पेडे 3 तो आपने खेलना शुरू कर दिया या अभी थोड़ा पहले रेमनेंट खत्म करने की सोच रहे हो उसके बाद पेडे 3 जाओगे Welcome to Clint's. Whatever you need, I'm sure I've got it lying around somewhere. Except mech parts. Don't trade those anymore, so don't waste your time asking. I'm just going to look around if you... If you need anything, just follow the sound of falling inventory. You'll find me eventually. Funny you ask, because I'd like to know too. He owes me a sizable debt. पर्सुएट करने की कोशिश करता हूँ पर मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा I don't want to be mixed up with anything like that. No. I do understand. I'm trying to figure out a way to help you, okay? Oh, nice. हो जा I'm trying to be reasonable here. ऑटो पर्सुएट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी Fine, fine. I don't know where he is, but ask Lizzie up at the bar. She knows everybody. धन्यवाद अंकित भाई वही मैं सोच रहा हूँ अब से क्या बोलते हैं हर महीने का एक स्ट्रीम कंपाइलेशन बनाऊंगा एक नया वो शुरू कर रहा हूँ और फिर प्लस रिव्यूज़ भी बनाने की सोच रहा हूँ पर रिव्यूज़ बनाने के लिए क्या बोलते हैं वीडियो एडिटिंग जो है बहुत ज़्यादा लगता है पता नहीं समय मिल पाएगा कि नहीं प्रॉपर वो रिव्यू के वीडियो बनाने में पर धन्यवाद अंकित भाई वैसे आपको रेमनेंट 2 कैसे लग रहा है You sure you got the right person? Helgi and I have had several run-ins in the past. Okay, I'll find someone else. Yeah, and while you're here, maybe see about buying something, eh? I remember watching shiny new mechs rolling onto ships at the port. Been a long time since then. Don't mind the mess. I've got a system. Let me just bring that up. ठीक है पहले थोड़ा सेल कर लेते हैं वेपन वो सब 40 ना इसे बेच दो 28 हाँ इसे बेच दो इसे रखो फिर के पास कुछ नहीं है एमो ले लो डेफिनेटली
तो ये पसंद आ रहा है आपको ये क्या बोलते हैं रेमनेंट 2 पसंद आ रहा है तो एकदम सही है। वॉल्ट भाई थोड़ा वो आज लाइस ऑफ पी खेल रहे हैं तो ज़्यादा समय नहीं मिल रहा आजकल हमें, वो खेलने का समय नहीं मिल रहा है रेमनेंट 2। लाइस ऑफ पी भी काफ़ी अच्छा है वैसे, अगर आप सिंगल प्लेयर खेलने चाहते हो कोई तो देखने में भी काफ़ी अच्छा है, सोल्स टाइप है पर अच्छा है। City's just finally getting back on its feet. हाँ विजिट कर रहा वॉल्टन दबाई के, अच्छे हैं, लाइस ऑफ पी खेलते हैं वो। वैसे आपके वीडियो अपलोड का क्या हुआ वैसे अंकित भाई? ना कोई शॉर्ट देख रहा हूँ ना कोई वीडियो देख रहा हूँ आपका। हफ्ते में 2-3 बार एक बार चेक करता हूँ देख सोच के कि शायद अपलोड कर दिया हो, मैंने बस नोटिस नहीं किया। चलो अभी के लिए इससे बात करते हैं, मुझे लग रहा है कोई पर्सुएट करना ही होगा इसको। Looking for a drink? Don't serve anything fancy, so if you're about to ask for wine spritzer or whatever, you can hop right back on your ship to New Atlantis. Not as a rule, no. Just the ones that come to Gagarin and want to change it. And those folks usually ask for disgusting, overly complicated drinks. You one of them? हाँ वो समझ में आ रहा है डिमोटिवेटेड का। मैं भी एक्चुअली एक बार फाइनल फैंटेसी 16 का अपलोड खत्म कर दूँ ना, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूँगा। And don't start anything, all right? Sure do. I came into some money right around the time the war. मोटिवेशन के लिए आ रहे हो तो गलत बंदे पे आ रहे हो। मेरा भी ज़्यादा मोटिवेशन है नहीं ये वीडियो एडिट करने में। Credits was flying to New Atlantis. I got this place for a wink and a nod. Have been slinging drinks the way I like them ever since. Ah, yes. The detectives. I heard about you. मुझे आजकल ये शॉर्ट एडिट करने में ज़्यादा मजा आ रहा है। आज एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट अपलोड करने वाला हूँ मैं 2 बजे। I serve drinks here, friend. We were told that you are a local crime. We serve drinks here. धन्यवाद अंकित भाई। Here's a list of our specials for today. धन्यवाद। There's nothing on here. Oh, that's strange. Here, let me fix that. Don't worry, it's just the one sale today. Oh, right. Of course, it's a number. Here you go, Captain. All yours. Oh, अभी नहीं। Oh, in exchange for this location, ये काम definitely करूँगा। Not for this kind of deal. Sorry. Credits are easier for you explorer types, though, aren't they? The service I provide is worth quite a lot. Oh, ये का ऑटो परसुएट इस पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं 4000 देने को रेडी हूँ इससे। रेगुलर हूँ पर उसकी वजह से क्या बोलते हैं अपलोड भले ही रेगुलर करता हूँ पर थोड़ा मैं भी डिमोटिवेट हो गया हूँ बार बार सेम टाइप का अपलोड करके कट वो सब, इसलिए शॉर्ट्स का एडिट करने में मज़ा आ रहा है मुझे आजकल ज़्यादा। ये मेरे हिसाब से एग्री नहीं करेगी पर ठीक है फिर भी ट्राई करता हूँ। Don't think I'm desperate or anything, but you do have a point. Oh, please हो जा। If you don't like it, find someone else to deal with.
You need to tell me what you know. ये इसके अलावा मैं किसी और के साथ जा भी नहीं सकता अभी. हो गया. I'd like to tell you, believe me. All right. Consider it a favor. Sending the coordinates now. Nice. Wait, so let me get this straight. You want the bartender to testify he's not a lousy drunk? This is a bad idea, yes. Don't have to tell me twice. चलो. See ya. हाँ, ये शॉर्ट्स में नए चीज़ें ट्राई करने के लिए मैं काफ़ी वीडियोस भी चेक कर रहा हूँ. Just keep turning right. You'll get where you're going eventually. Or was it left? ये वीडियोस बार चेक ऑनलाइन चेक करते रहता हूँ. ये प्रीमियर प्रो के वीडियोस जो कुछ दिमाग में कुछ नया आता है, मैं जो करना चाहता हूँ तो उसको पहले जानना पड़ता है कैसे करते हैं. तो उसके लिए मैं ऑनलाइन वीडियो देखता हूँ, ढूंढता हूँ, देखता हूँ. वो सब करने में मज़ा आता है, रिसर्च करने के लिए नए टाइप का कैसे करते हैं ये सब. ये रहा हेल्गी ऑक्सन. कुछ चोरी करने लायक है तेरे घर में? ना. I don't suppose you're here to tell me I've won a ticket to a new planet, huh? Sorry, Doctor. Not today. We came to Gagarin to investigate Irvin Mandani's contract with the mining company a long time ago. Ring any bells? Irvin, yeah. Biologist. Hunter. Yeah, I remember him. Why? वैसे आप भी ऑनलाइन चेक करते थे या फिर आपने खुद ही पूरा सीखा ये करना, एडिटिंग वो सब? You clearly... Oh, maybe we can work something out. Nah, I don't trust you. I don't even know you. So take a long spacewalk with an empty tank, will you? Please. Irvin was once one of your colleagues. He was the one Hephaestus blamed for an ecological disaster about 20 years ago. Do you remember any of that? No, I don't remember lies. That we think will make a difference, yes. It's been 20 years. 20! Get out of here. Look, I know this is strange. We show up out of the blue about things that happened decades ago. But right now, nobody save us knows the truth. And that means we're the only ones who can clear Irvin's name. This is about a better future for Gagarin. That may be what it's about, but it's not what it's gonna be. I get it. There's a lot to be cynical about, but that's exactly what they want. They only win when we stop trying. Only new simple But if editing. you अब थोड़ा testify better आ in गया. court, you can hold them accountable. You can affect change. Testify? The trial is वो over. ये The मुझे भी verdict पहले मेरे rendered. भाई ने थोड़ा बहुत सिंपल एडिटिंग सिखा दिया था क्योंकि वो यूज करता था वो इस्तेमाल करता था वो. Because I tried. और काफी समय before, तक मैं भी सिंपल and they एडिटिंग ही करता था threatened फिर. me. 20 years ago. I still wake up in fear almost every night. फिर ये शॉर्ट्स जब करने लगा ना तो मैं शॉर्ट्स में डिफरेंट इफेक्ट्स डालना चाहता था. तो फिर ये क्या बोलते हैं उसका चेक करने लगा डिफरेंट कैसे करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ. Ellie Yankton. But why? तो वो ये शॉर्ट से ही मैं डिफरेंट चीजें वो सीख रहा हूँ करने के लिए और मुझे मजा आ रहा है ये एडिट करने में अब. I cannot do that. Why is this so hard to understand here? इसे ऑटो परस्यूट कर दूंगा अगर ज्यादा हुआ तो. My contact has an audio log with the identity of the speaker verified, time-stamped, everything. If you can prove it's real,
That would explain why I never showed up the first time. As opposed to, you know, Helgi being Helgi. Oh, ये अब पता नहीं, most probably And जानता so था. what if it does? The ground don't got any say, it just gets stepped on over and over again. में क्या auto persuade. You know what? That does make sense. वो सही में YouTube का वो बहुत अच्छा है कि किसी भी चीज का अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो मिल जाता है. I'd be willing to testify on one condition. I want to know what happened to Irvin. Because when he disappeared, let's just say I had an epiphany. Hephaestus didn't need to say a word. That's when I knew the threats against me and my family were real. Dr. Hawkson, it wasn't Hephaestus that took Irvin's life. It was the war. Irvin was just in the wrong place at the wrong time. Caught in the crossfire. Then I am sorry for your loss. It won't change the past for either of us. But I will testify. And maybe, wherever Irvin is, you'll be glad that we can finally stick it to those assholes at Hephaestus. Thank you, Doctor. Thank button क्या होता है? Yeah, don't get all mushy on me now. I need a drink. Talk with Ellie. डोनेशन और मेंबरशिप समझ में आता है क्या है, वो सिंपल है, पर थैंक बटन क्या होता है? करता क्या है थैंक बटन? पहली बात कहाँ? उधर ऊपर जाना है ना? Helgi agreeing to testify is a great help. We might need witnesses to vouch for his character, though. Someone in security, maybe? ऑफलाइन होने पे भी डोनेट? वाह भाई वाह, क्या क्या सोचते हैं YouTube? Okay, you two, lay it on me. Did you find Helgi? Did he agree to testify? Well, we've got good news and... well, that's it. Just more good news. Okay. Does that mean he said yes? Well, that is perfect. She's probably the best person to call on should Hephaestus decide to play dirty. Well, you two have done all that you could. Now it's time to hand the baton off to me. What do you think, Ellie? Do we have a chance? The evidence you've gathered is impressive. It truly is. So what's the verdict? In this case, I'd say spoilers are appreciated. I almost never say this because I don't want to jinx it, but I think this case is a slam dunk. Huzzah! That's what I like to hear. I think we can do everything on our checklist. Clear Irvin of any wrongdoing, charge Hephaestus with the cover-up, and even restore Helgi, Dr. Hawkson's standing in the scientific community. All in all, though, really outstanding work. We wouldn't have gotten this far without your efforts. And I've got to imagine that wherever Irvin is, he appreciates it too. Agreed, Ellie. And thanks for being our anchor in this. We should probably get out of Ellie's way and let her do her thing. We can talk more in private. Wow, we actually did it! Solved the case. And hopefully cleared Irvin's name. I feel like... what's the old saying? A great weight has been lifted off my shoulders? But it's actually true. I feel like I'm 80% biomass and 20% aerogel. एरोजेल, ये मुझे याद है, एरोजेल का काफ़ी पढ़ा हूँ. ये 99.9% या 99.5% सिर्फ और सिर्फ हवा है उसमें. It's a substance that is literally lighter than air, depending on the planet. Habitable planets tend to range from 1 to 2 milligrams per cubic centimeter.
Most aerojails are about 1/10 of that. I feel like I'm currently hovering in that territory. Give or take 1/10. It's a relief, a grace, a seismic gravitational shift. I feel like a new man. वैसे अंकित भाई 500 सब अगर मिलेंगे तो मिलेंगे. मैं ट्राई कर सकता हूँ, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ उधर तक पहुँचने के लिए. पर वो लोगों पे डिपेंड करता है. इसलिए तो मैं ये क्या बोलते हैं डिफरेंट चीज़ें सीख रहा हूँ ये शॉर्ट्स में करने के लिए. ये स्ट्रीम हाइलाइट्स डाल रहा हूँ और रिव्यूज भी डालने की सोच रहा हूँ. Ellie would know better than I, but I doubt it'll be anytime soon. पर जब पहुंचूंगा तब पहुंचूंगा. मैं कुछ कर नहीं सकता उसका 500 क्या. It's a special kind of adhesive that makes you stick to old filing cabinets and manila envelopes. I'm feeling great. Although I could do with some wine and cheese. Why stop at emotional satisfaction when we can indulge in the culinary too? But if I can be serious for a moment, thank you. I couldn't have done this without your help. That makes 2 of us. 3 if you count Harvey. And who wouldn't? He's practically family. In fact, Harvey's got a little explorer in him too. According to this slate I found, turns out that our spiky friend's been all across the galaxy. Ooh. You know what? He just might. But it's probably best you chart the course. Harvey doesn't do well with things that require hands. We've been through a lot, haven't we? I had forgotten what it was like to work with someone so closely. On top of everything else we've done together and with Constellation, yeah, I think so. Investigating Irvin's case with you is something I'll remember forever. I've come to realize that some events, some people, stand out as pillars of my life. Yes, some of them do. And if we're lucky, they change us for the better. We only get a brief moment in this universe to interact, to feel, to be who we are and experience the range of emotions that our bodies and minds have evolved to comprehend. शॉर्ट्स ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है. वो सही. प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस हैं शॉर्ट वीडियोस के जगह. मुझे लगा था स्टार्टिंग में कि मेरे पास जितने क्या बोलते हैं मेरे पास जितने वीडियोस बनेंगे ना उससे ज़्यादा शॉर्ट्स होंगे फाइनल फैंटेसी 16 के. पर लग रहा है वैसे नहीं होने वाला. You seemed so skeptical of Constellation when we first started working together. It's good to hear you say that now. I've explored many worlds, and I've worked with Constellation for most of my life. I cherish those memories. But you have changed me as a person forever. I don't want to look back years from now and wonder what if. I need to know what you think about us. Friendship. Here we are, the most fortunate people in the galaxy, because we get to explore it all together, as friends. Let's talk, when you have time. Nice, ये हो गया. Barrett considers you an ally. Hello, detectives. Hello. Definitely बताइए अंकित भाई. मैं ट्रैक सुनने को definitely रेडी हूँ. पूरा गेम भी पॉज कर दिया ताकि फुल अटेंशन कमेंट्स पे हो.
एनवीडिया के बारे में मालूम है पर शैडो प्ले के बारे में नहीं मालूम। वो क्या है एनवीडिया शैडो प्ले? समझा नहीं ये उसका यूज क्या होता है वैसे शैडो प्ले का? शैडो प्ले करता क्या एनवीडिया शैडो प्ले एग्जैक्टली? और मतलब वो गेम के बीच में ही ये उसमें क्या बोलते हैं शैडो प्ले को खोल के वो सेव कर सकता हूँ सेपरेटली और वो कहीं और सेव हो जाएगा वो क्लिप, जैसे पिछले अगर 15-20 सेकंड का सेव करना चाहते हो तो वैसे। और एक शॉर्टकट की होता है डायरेक्टली, ओके। 1 to 10 मिनट्स। हाँ ये क्या बोलते हैं प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स पे भी ऐसा होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। प्ले स्टेशन में तो डेफिनेटली होता है क्योंकि मैं कई बार ऐसे जब डेस्टिनी ऐसे ऑफ स्ट्रीम खेलते रहता हूँ ना, तो कभी कभी क्या बोलते हैं पीवीपी खेलता हूँ तो एक अच्छा सा मूवमेंट मुझे दिख जाता है, मैं पिछले 1 मिनट या 30 सेकंड सेव कर लेता हूँ। तो उसी की तरह है थोड़ा बहुत, बस यही डिफरेंस है कि एक की से ही वो हो जाएगा। सही है, देखता हूँ उसके बारे में, शैडो प्ले के बारे में। धन्यवाद, एक और बार फिर से मदद कर दी आपने अंकित भाई, काफी मदद कर रहे हो आप वैसे मेरे। वैसे आगे बढ़ने से पहले इस बैरर से बात कर लेते हैं क्योंकि बात करने का था कुछ। Well, if it isn't our own ranger. I hope you're not taking the job permanently. There's a lot less paperwork in Constellation, and the benefits are pretty good too. Costume party coming up, huh? Anyway, it suits you. Anyway, I'm just glad Ron Hope is gone. He was an incredible entrepreneur, but he couldn't come back from what he did. Maybe he could have been rehabilitated. Maybe. But I just can't see that happening. And even if so, he couldn't remain in power over those people. Not after all that blood. It was a hard choice that you made, but I'm proud of you, Captain. हो गया ना? वैसे मैं We should catch up sometime. Later. हाँ बाद में बात कर लूँगा। मैं शॉर्ट्स के लिए क्या करता हूँ ना, जब ये वीडियो एडिट्स करते रहता हूँ ना, तो बीच में अगर कोई एक दिख जाता है मुझे सही मोमेंट, तो उधर ही मैं एक सेपरेट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मेरे पास एक सेपरेट फोल्डर है हर एक गेम के लिए, एक सेपरेट फोल्डर शॉर्ट्स के लिए, तो उधर डाल देता हूँ मैं उससे सेव करके। पर वही है, मुझे याद नहीं रहता है ना, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा होगा ऐसे करना। देखता हूँ उसका थोड़ा बहुत। अभी के लिए कहाँ जाना है मुझे मिशंस का देखे तो?
ऐश तक है ना, पावर का है ये, कार्गो लिंक के लिए मेरे पास है नहीं समय। यार डीप कवर आदमी क्या, क्यों नहीं ये कर लेते हैं। या फिर मान में क्या मेन मिशन ही करते हैं, यार बहुत समय से किया नहीं है। Add artifact to the collection. अभी के लिए उधर ही चलते हैं, न्यू अटलांटिस। चलो अल्फा सेंटोरी में ही है। एक मिनट, ओ मैं गैगारिन में था और ये यहाँ पे है ना, लैंड। चलो अंदर चलो, और ये फिर फाइनली आर्टिफैक्ट को डालते हैं उसके अंदर। This place is a delightful relic tangled up with hope, grit, and science. से और अभी के लिए यहाँ पर ही बंद करता हूँ, पर उससे पहले अंकित भाई, अब मैंने जो आज शॉर्ट्स अपलोड किया है, एक वो चेक करके आपके व्यूज़ बताना उसके बारे में, वो शॉर्ट्स के बारे में, क्योंकि मैं सही में बहुत ही क्या बोलते हैं प्राउड हूँ वो शॉर्ट का जो मैंने बनाया है। और आपके व्यूज़ एक बार देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद अंकित भाई फीडबैक के लिए। पर मुझे अब लंच के लिए जाना है, तो अंकित भाई, वॉल्ट हंटर भाई और उनके अलावा जो कोई भी स्ट्रीम में आया है, 9 लोग जिन्होंने मुझे क्या बोलते हैं मेरे स्ट्रीम को लाइक किया है, उन सबको मेरे स्ट्रीम में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे लंच के बाद मिलूंगा 4:15 तक, तो फिर तब मिलते हैं।